Okay, uncertainty in the calculated quantity. You have studied absolute uncertainty, which is equal to least count of the measuring instrument, and you get that this absolute uncertainty from the scale deviation, from the minimum scale deviation, least count. But what if we calculate some quantity like R is equal to V over I? We measure the voltage from the voltmeter, we measure the current from the ammeter, and then we divide them to get the resistance. The voltage की जो आपके पास uncertainty होगी, you will get it from the voltmeter, from the measuring instrument. Current की uncertainty you will get from the ammeter, from the measuring instrument. But how will you tell the uncertainty in resistance? Because you are not directly measuring it from the measuring instrument, you are calculating it. तो अब इस सेक्शन के अंदर हमने ये देखना है कि हाउ टू फाइंड अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेटेड क्वांटिटी. बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा देखते हैं. आपको मैंने बताया था कि फॉर एनी मेजरमेंट आपने इसको लिखना होता है measured value plus minus absolute uncertainty, like hypothetical value 15.0 plus minus 0.1 centimeter. It is the length. So for any quantity, any physical quantity, if let's suppose its symbol is x, तो इसको हम इस तरीके से represent करेंगे x plus minus delta x, आगे जो भी इस quantity का unit होगा. राइट. फॉर एग्जांपल अगर हमने r को लिखना होगा तो इसका जेनेरिक इन सिंबल फॉर्म हम इस तरीके से लिखेंगे r प्लस माइनस डेल्टा r ओम्स. इसमें r क्या होगा, जो आपने कैलकुलेट की है, जो मेजर की है वो वाली वैल्यू, और डेल्टा r रिप्रेजेंट्स द एब्सोल्यूट uncertainty. Now if delta represents absolute uncertainty, then fractional uncertainty will be equal to fractional uncertainty क्या थी, absolute uncertainty, which is delta x divided by the measured value. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास x, so delta x over x. and similarly अगर हम बात करें percentage uncertainty की, so the percentage uncertainty को हम in general हम लिखेंगे delta x the absolute uncertainty divided by x the measured value into 100%. अब x जो है ये मैंने सपोज किया है कि इट इज द सिंबल ऑफ एनी क्वांटिटी. अगर यहाँ पे वोल्टेज होगी तो ये डेल्टा v ओवर v आ जाएगा. यहाँ पे अगर लेंथ होगी तो डेल्टा l ओवर l आ जाएगा. जो भी आपका सिंबल होगा उस क्वांटिटी का वो यहाँ पर आ जाएगा. अब हम चलते हैं कुछ रूल्स की तरफ which will be used to find the uncertainty in the calculated quantity. So if there is some addition or subtraction, then absolute uncertainties are added. For example, let's suppose we have a point over here. This is the point A and this is the point B. The distance from point A to point B is x1 and that is equal to 10.5 and the uncertainty in is at 0.1 centimeter. And then there is another point C and the distance from A to C is x2 and x2 is given as 26.2, 26.8 plus minus 0.1 centimeter, and you have to determine the distance from point B to point C, this distance. Now this distance x will be given as x2 minus x1. If you subtract x1 from x2, you will get this distance x. So the formula of x will be x2 minus x1, or अगर हमने इसको, because we have to determine this distance as well. So x2 is 26.8
माइनस x1 इज 10.5। अभी हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को कुछ नहीं करना, वी हैव टू टेक द माइट वैल्यूज। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, सो व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द आंसर? सर आंसर है 16.3 सेंटीमीटर। 16.3 centimeters. Now let's find out the uncertainty in the value of x. Now if you see here, it is the subtraction x2 minus x1, and if there is addition or subtraction, then we add absolute uncertainties. So the absolute uncertainty in x means delta x would be equal to delta x1 absolute uncertainty in x1 plus delta x2 the absolute uncertainty in x2. So delta x1 is 0.1 centimeter plus delta x2 is also 0.1 centimeter. So delta x would be equal to 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 centimeters. So अब आप जो x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, including uncertainty, it is equal to 16.3 plus minus 0.2 centimeter, right? ठीक है। So whenever the formula is of addition or subtraction, you will add absolute uncertainties. तो सर Now, मैंने पूछना है, जी जी, अगर यहाँ पर हुए 16.3 और 10.55 हुए, तो मेरे भाई 0.01 प्लस 0.1 और ऐड करके 0.11 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो यहाँ पे, सॉरी 16 पॉइंट, एक हुए 16.3 वैल्यू है और दूसरा है 10.53। यही वही 10.5, तरीका होगा। जी बिल्कुल वही तरीका ही होगा। ठीक है। अच्छा, जब आपने ये जो आपने कहा ना, इसको जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ना, इसके अंदर रूल पता है क्या होता है? जी जब भी हमने ऊपर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल पढ़ा ना, वो क्या पढ़ा है हमने कि आपने देखना है कि विच क्वांटिटी हैज लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे ठीक है। बिकॉज यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इट, तो इसमें आपने जो आंसर देना है ना, वो उसके लिए आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने, आपने यहाँ पे देखने हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मीन्स जब आप इसको, लेट्स सपोज आप इसको ऐड कर रहे हैं ना, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 26.83 आएगा। तो अब जी इसको सर। आपने रिड्यूस कर, 20 अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो ये वाली क्वांटिटी है ना, it is to one decimal place and this quantity is to two decimal places। उसमें से लीस्ट वन कौन सी है, ये 1 वाली है। तो आपने इसको रिड्यूस कर देना है टू वन डेसिमल प्लेस, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 26.8। 26.8। ठीक। ओके, नाउ इफ द फॉर्मूला इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो रही है, देन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, और बिकॉज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के अंदर बस 100% का डिफरेंस होता है, सो यू कैन आल्सो से दैट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज आर एडेड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ऐड कर रहे थे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो तो क्या ऐड करेंगे, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज फ्रैक्शन। अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल फ्रैक्शन। अनसर्टेनिटी। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सो वी हैव voltage 5.2 plus minus 0.1 volt and the current is 0.84 plus minus 0.05 ampere. We have to find the value of the resistance including the uncertainty in it. So first of all, let's find the value of resistance. R is equal to V over I. V is 5.2 and I is 0.84. So what is the result? 5.2, ये 6.19 6.9? 047 6.19। 6.19, ओके 6.19। बट अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि इधर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इधर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और जी इधर भी सर।
टू सिग्निफिकेंट तो फिगर्स हैं, सो योर आंसर शुड आल्सो इंक्लूड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे 6.2 ओम कर, राइट। सो आवर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 6.2 ओम। अब हमने फाइंड आउट करना है अनसर्टेनिटी इन इट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रही है, v over I, इट इज द डिवीजन, एंड फॉर डिवीजन वी हैव टू add percentage uncertainty. So we can write that the percentage uncertainty in R, percentage uncertainty in R would be equal to delta R over R into 100%. It will be equal to percentage uncertainty in V plus percentage uncertainty in I. तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा V over V into 100%, the percentage uncertainty in voltage plus delta I over I into 100%, the percentage uncertainty in I. Do you get this point? थोड़ा सा आ गया, तो रिपीट The कर दें। the percentage uncertainty, we have to find the, actually we have to find the absolute uncertainty, but the ठीक rule है। is that if the formula includes multiplication or division, then percentage uncertainties are added. Means जी the सर। percentage uncertainty in R will be equal to percentage uncertainty in V plus percentage uncertainty in I. ठीक। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन अगर हो रही है तो आपने बस ये देखना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज इंक्लूडेड हैं। अब ठीक है। इसमें राइट साइड पे जो दो क्वांटिटीज हैं वो हैं वोल्टेज और करंट। तो आपने जी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर फाइंड आउट करने के लिए जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई तीसरी क्वांटिटी भी होती है ना जो v और i से कोई मल्टीप्लाई हो रही होती है या डिवाइड हो रही होती, तो आपने उसको भी इसमें प्लस कर देना। जितनी भी ठीक है। क्वांटिटीज होंगी राइट हैंड साइड के ऊपर, आपने उन सब की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड अप कर देना। ठीक है। ठीक हो गया, ओके नाउ। अच्छा, अब वी आर आफ्टर फाइंडिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमने उसकी बस वैल्यू लिखनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपको फाइंड आउट किया हो कि आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो फिर तो आप इसको 100% पे ही रहने दें, इसी तरीके से आगे आप सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अब यहाँ पे हमारे लिए इजी है कि हम यहाँ से ये 100% जो है ना इसको कैंसिल कर दें और इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ले आएँ, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है। तो इसको हम अगर हम रिमूव कर दें तो डेल्टा आर ओवर आर वुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली एक स्टेप बचाने के लिए डेल्टा वी, what is the value of delta v? Delta v is वन 0.1 वॉल्ट। divided by 5.2. 0.1 was the absolute uncertainty and the measured value of v was 5.2 volts, ये आपका आ गया, plus delta I, the absolute uncertainty in I was 0.05 और I की वैल्यू थी 0.84। अब आप इसको अगर आप सॉल्व कर लें, डेल्टा आर ओवर आर इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड को जरा कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताएं व्हाट इज द आंसर। 0.0787। 0.0788, 0.07875। ओके, अच्छा अब नाउ अगर आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए होगी तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अगर आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी चाहिए होगी तो इट इज द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, बट वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो अब ये जो आर की हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी इसको भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आर की वैल्यू हमारे पास आई थी 6.2 ohms। टू। अब इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाएगी।
Sir, it has 0.4882. 0.488. So now R is 6.2 ohms. जी सर. कितनी डेसिमल प्लेसेस तक है? 1. जी सर. तो इसलिए आप जो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी दैट विल आल्सो बी टू 1 डेसिमल प्लेस. तो इसको आप जब राउंड ऑफ करेंगे इट विल 0.5. बिकम 0.5. 0.5. तो ये आपने R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इंक्लूडिंग द अनसर्टेनिटी. राइट जी. ठीक. तो ये आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा फिजिक्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज हैं दे इंक्लूड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. हाँ जी. जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले तो कोई कोई होते हैं जिसके अंदर लेंथ इस तरीके से मैंने एग्जांपल दे दी, यू हैव टू फाइंड चेंज इन टेम्परेचर, उसमें हो सकता है. बट मोस्ट ऑफ द formulas include multiplication and division. That is why most of the questions related to uncertainty includes this procedure. ठीक है. अच्छा, अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि पावर फैक्टर के लिए क्या होगा. हमने एडिशन के लिए देख लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए देख लिया कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं. फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, और यू कैन आल्सो से दैट fractional uncertainties are added. What about power factor? Means if we have some formula like this, y is equal to x cube. Now there is a power of x. So what should we do now? वैल्यू पुट कर लें. नहीं, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर, ओ सॉरी, हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है इन y. फिर इसको वर्क करेंगे x प्लस माइनस डेल्टा अच्छा, x इसको अगर वाला. मैं ऐसे लिख दूं x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये क्या है? इट इज मल्टीप्लीकेशन. एक ही क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन. है, एक ही क्वांटिटी है, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है. हाँ जी. तो इट तो फिर आप मीन्स के परसेंटेज अनसर्टेनिटी या इन एक्स फ्रैक्शनल. विल बी एडेड 3 टाइम्स. यानी अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई, बल्कि फ्रैक्शनल की टर्म्स में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास 100% जरा बार बार ना लिखना पड़े. परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन वाई वुड बी इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन एक्स मल्टीप्लाइड हो रही है एक और दफा, इसलिए अगेन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन एक्स और अगेन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन एक्स. तो इसको अगर आप देखें तो ये क्या बन जाएगा? 3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स. और अगर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी की टर्म में रखना हो तो यू कैन राइट इट एज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स. ये क्या हो रहा है कि हमने जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दी. यहाँ पे एक्स की पावर थी 3, तो वी हैव मल्टीप्लाइड परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद 3. बस प्रोसीजर वही मल्टीप्लिकेशन वाला ही है, बट वी हैव रिड्यूस इट टू दिस थिंग ताकि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े. हम डायरेक्ट उसको 3 से मल्टीप्लाई करें एंड गेट द आंसर. ठीक है. It would be written here. The conclusion is for power factor, if there is some power for any variable in the formula, then multiply the percentage uncertainty or fractional uncertainty. You can take either of them by that power. अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास रेडियस है ऑफ अ स्फीयर. इट इज मेजर्ड एज 2.25 सेंटीमीटर by vernier calipers with least count of 0.01 centimeter. You have to find the volume of the sphere with uncertainty. So जो आपके पास यहाँ पे जो radius की वैल्यू दी हुई है that is 2.25. The least count is also given 0.01 centimeter. So plus minus 0.01 centimeter. This is the value of radius, and we have to find the volume of the sphere with the uncertainty. So volume of the sphere, what is the formula for volume of the sphere? The 4/3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. Just put the values in it and
find out the volume. Uh, Sir, answer है 47.7129. 47.71. अच्छा, आपने यहाँ से बताया 47.71. देयर आर 3 significant figures here, तो इसको हम 3 significant figures तक reduce कर देंगे. It will be 47.7 cubic centimeter. ठीक है. Now we have to find the uncertainty in V, and we have in this formula R Q means the power of 3 of R. The percentage uncertainty in V will be equal to 3 times percentage uncertainty in R, right? जी सर. अब अगेन यहाँ से इसको हम रिमूव कर देते हैं, या आप डायरेक्टली भी वैसे बुगारिस के लिख सकते हैं. Okay, now delta V over V will be equal to 3 times delta R. The absolute uncertainty in R was 0.01 divided by 2.25. इसको अगर हम सॉल्व करें, और डेल्टा V over V is 47.7, 3.01 over 5. इसको आप सॉल्व करें and you will get delta V. What is the answer? So just 3 into 0.01 over 2.25. उसका आंसर है 0.0133. 0.0133. Okay, multiply it with 47.7. So आंसर है 0.636. 0.636. It is to 1 decimal place, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो भी 1 decimal place तक होना चाहिए. So आपका जो B होगा that will be 47.7 plus minus 0.6 cubic centimeter. Right? So you can use these principles in order to find the uncertainty in the final result in the calculated value. ठीक है.